7 of the 21-day challenge learning SQL with Muhammad Nisar Khan. Hope everybody is doing good, everybody is doing fine. And today is our day 7. And yesterday we had a wonderful session and it went for around 2 hours and 30 minutes, which was good. And today we have on agenda, it's about trends, comparison and analytical storytelling. And today we will be focusing on these aspects. And before moving, yesterday we stopped at a query which I felt that I couldn't understand despite ChatGPT providing me with the answer to the query. So this was the query, and today, before moving forward, let's discuss something about this query, so that if I explained it to you, that means that I've understood it myself. I didn't understood this query yesterday, so I told you that I would be working on it and I would try to come up with some solutions. So here we go. We will begin with explaining. I will begin with today's session by explaining this query. Let's go. Assalamu alaikum दोस्तों. Day 7 of the 21-day learning SQL challenge में आपका खुशामदीद. और कल के सेशन में जैसा कि आपने देखा था, काफ़ी अच्छा सेशन गुजरा था हमारा और काफ़ी लंबा चला गया था. 2 घंटे 30 मिनट का वो अच्छा सेशन था और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी उसमें. तो उसमें हमने फैक्ट टेबल्स पढ़े, जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर काम किया, रैंकिंग के ऊपर काम किया, टाइम पे सेग्रीगेशन पे भी काम किया. लेकिन एक जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, यहाँ पे आके हम थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार हुए थे. और उसको फिर इससे मैंने जब पूछा तो मुझे बता तो दिया था कि वो समझ नहीं गई. फिर भी मैंने आपको कहा था कि मैं जब स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले एक दफ़ा इसके ऊपर आपकी रिसर्च इसको करूँगा तो आपको जाएगी. मैं अगर एक्सप्लेन कहाँ हूँ इसका मतलब मुझे, क्योंकि खुद क्योंकि यार एक यूज़ तो फिर आप एडवांस, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा है तो इसकी एक्सप्लेनेशन पे सबसे पहले हम बात करेंगे अभी, और उसके बाद हम डे 7 पे जाएंगे. और डे 7 का एजेंडा जो है वो है ट्रेंड्स के ऊपर, कंपैरिजंस के ऊपर और एनालिटिकल स्टोरी टेलिंग के ऊपर. तो डे 7 पे जाने से पहले इस सवाल को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, अपने जितना क्लियर कर सके. ऑब्वियसली अगर क्लियर कर दिया तो उसके बाद हम डे 7 को स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली. तो सबसे पहले इस पे काम करते हैं. चलें इस पे काम करते हैं. सबसे पहले तो उसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, सीक्वल के साथ कनेक्ट करते हैं. ये अभी कनेक्ट हो गया और क्यूरी तो यही थी. अब इस क्यूरी को मैं किस तरह चेक करूँ, इसको यहाँ भी चेक करते हैं. एआई मोड पे जाके ना इसको कॉपी करते हैं. मैं कहता हूँ कि यार इसको एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन. अभी इसको सवाल भी बताता हूँ कि इस सवाल के लिए ये क्यूरी है, लेकिन मुझे क्यूरी समझ नहीं आ रही. ठीक है, सवाल भी इसको बताऊँगा ताकि मुझे थोड़ा सा ना ये डाउट्स ये मुझे क्लियर करें. अच्छा, ये नहीं था सवाल, ये था कॉपी. ठीक है, क्यूरी दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब इसको बताते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्यूरी. why select and from use twice. Explain it to me. ठीक है, मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही है, आप मुझे इसको एक्सप्लेन कर दें. तो ये कह रहा है कि यार इस सीक्वल स्ट्रक्चर में इसको सब क्यूरी बोलते हैं और नेस्टेड क्यूरी. अच्छा, सब क्यूरी.
It is used to perform calculations in two distinct steps. Think of it like a set of Russian dolls. The inner query does the first job and the outer query uses that results to finish the work. अच्छा, inner query में ठीक है. Why use select and from twice? ठीक है. You are asking two mathematical questions that cannot be solved at the exact time. What is the total cost of each individual order and what are the average of those total costs? ठीक है. स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन में इनर क्यूरी जो बेबी क्यूरी है. सेलेक्ट sales order number, some sales as total order from fact internet sales and group them by sales order number. ठीक है. What does it look like? It looks like a raw data where one order might have multiple rows. One pizza, two soda. It uses temporary virtual table that lists every unique number in the final the parent outer query. ठीक है. Select average order total का and it treats the results it treats the result of the first step like a normal table named average result. ठीक है. अब उसके बाद समरी क्या है. parent inner clause. ठीक है. primitive is equal to sub query in the from always alias in sub query in from. Would you like to know to common table expression to make it easier to read? अच्छा. Now I think so. Friends, I think so. I got it. I understood the whole query because before this query, I was only working with the single query setup. There was nothing about nested setup before this. But in this query, we have what we call a sub-query mechanism, which we have used. And I asked the Google AI for some help here to explain me this query, and I think so I understood it very well now. Now it says that in SQL this structure is called sub-query or nested query. Okay, it is used to perform calculations in two distinct steps. So whenever you have two different steps to solve single problem, that is when you use nested query. Now it is giving me example, and I don't know what a Russian doll is, but still think of it like a set of Russian dolls. Okay. Okay, the inner query does the first job. The inner query, okay, this query from to no, this is the inner query which I have highlighted. This is the inner query. It does the first job, and the outer query uses the results to finish the work. You see, you understood it. Let me read it again. Think of it as like a set of Russian dolls. I don't know what a Russian doll is. So the inner query does the first job. So this is the inner query. The inner query is select the sales order. No, I would make it a bit more easier for you to read because it is too professional. Yeah, this is more like it. Okay, now this is the inner query. This is the inner query, my friends. Okay, now what is happening in this inner query, that it is selecting the sales. It is from the fact internet sales. First it is selecting the sales order number, and then it is summing the total sales amount as order total, and then it is grouping them, and it is grouped them by sales order number. So with this we have calculated the first job, which was one of our distinct calculations to solve that one question. Okay, and then with this result, the result from this is stored where? It is stored as order total. Then the outer query takes the average of this order total. Okay, you got it. So this then the outer query
uses this result with the order total and takes its average as average order value, and that is how we calculate our average order value per order. So we will move forward now. Why use select and from twice? Okay, you are asking two different mathematical questions that cannot be solved at the exact same time. Okay, so why we use two selects and two froms, or why do we felt the need to use nested queries? It was because I was asking two mathematical questions to be solved at the exact same time. Makes sense. I wanted to know the average cost per order. So the step one in the inner query, here what we did is that what is the total cost of each individual order. If you remember yesterday that we were able to calculate this thing, okay, and this was the problem. Now in the second step, the outer query, after calculating the total cost of each order as order total, we are taking the average of the total cost. Okay, the result which is stored in order total, its average will be calculated as average order value. Now this is step by step breakdown. This is the inner query which I have mentioned here. It's called the baby query, and it creates a temporary virtual table as order total that lists every unique order number and its one place and its one final total price. Okay, and then the outer query, which is the parent query, what it does that it takes the overall order total as I told you and takes a single average here, and that would be our average order value. Well, with that we understood it. Okay, we understood the nested queries. And a pro tip, I understood this, and I hope so I explained it to you. So whenever you have two distinct calculations which you wanted to perform at the same time, you have to use these nested queries, that you have to calculate the first thing and then store its value, and then you have to apply the second outside it, you can say at the same time. So it is the outer query. First the inner query does the jobs, and then the result which is stored temporarily in a virtual table, it is finally executed at the outer query. So what is the pro tip here? Okay, yeah. In SQL, the subquery in the from clause must always be given an alias, a nickname as order total, so the outer query knows who to call. Okay, so this is the tip which the AI is giving me. It says that whenever you're using SQL, the subquery, the subquery means this query in the from clause must always be given an alias. Okay, so because we are using the sales amount from this, so we would be giving it an alias as order total, so the outer query knows who to call. So whenever you executed this query, so the outer query knows who to call, and here it will be calling the order total. Now it is saying that would you like to see to rewrite using this common table expression CTE to make it even easier to read? Not now, not now. We will be moving forward now, because we have understood, I hope so, because I understood this thing. It was only the problem of nested queries because we were trying to solve a question which required two distinct mathematical expressions to be executed at the same time. So hence we adopted the two select and two from methodology here. So now we would be officially moving to day 7, and day 7 is officially on today. तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं, ये जो क्यूरी थी इसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं हुई थी, ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, फ्रॉम भी 2 दफ़ा यूज़ हुआ है। तो ये सवाल भी कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यार ये क्यूरी मुझे पढ़ के समझ नहीं आई। तो मैंने इस तरह किया कि इस क्यूरी को इधर गूगल के एआई में मैंने इसको शेयर किया और मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्यूरी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिजल्ट भी आ रहा है, मुझे आप ये बताओ कि भाई ये लिखा, इसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, इसको एक्सप्लेन मुझे करो, इसको एक्सप्लेन करो कि यार मुझे समझ आए, ताकि मैं फिर आगे ये प्रॉब्लम मैं फेस ना करूँ। ठीक है,
तो उन्होंने कहा यार ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब क्यूरी और नेस्टेड क्यूरी। ठीक है, सब क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी। सब क्यूरी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बस मैं समझ गया हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये रशियन डोल की तरह है। ठीक है, रशियन डोल का मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। द इनर क्यूरी, अब जो इनर क्यूरी है वो ये है। ठीक है, ये आपकी इनर क्यूरी जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इनर क्यूरी डज द फर्स्ट जॉब। इनर क्यूरी क्या करता है, पहला काम करता है, पहली एग्जीक्यूशन वो इनर क्यूरी करता है। उसके बाद जो आउटर क्यूरी है वो रिजल्ट लेता है कहाँ से, इनर क्यूरी से, टू फिनिश द वर्क। मतलब पहला काम क्या, पहला काम कौन करता है, इनर क्यूरी। इनर क्यूरी क्या काम करता है, इनर क्यूरी कोई रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, और उसके बाद जो आउटर क्यूरी है वो जो रिजल्ट आया है टेम्परेरी, उस रिजल्ट को यूज़ करके उस पूरे उसको पूरे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर थोड़ा सा और समझेंगे तो उसके लिए ये होगा कि हम वाई यूज़ सेलेक्ट एंड फ्रॉम ट्वाइस। ठीक है, तो हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम दो अलग अलग मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनको हम चाहते हैं कि सेम टाइम में सॉल्व हो। ठीक है, और जब हम चाहते हैं कि ये सेम टाइम में सॉल्व हो तब उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें इसको हम अलग अलग क्यों, आपके दिमाग में आएगा कि इसको अलग अलग क्यों नहीं हल करते। अलग अलग आप जब हल करेंगे ना तो फिर हमें इस तरह करना पड़ेगा कि ऑर्डर जब अलग अलग हल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इनर वाला हल नहीं करते, इनर क्यूरी। ठीक है, हम इसको अलग से सिर्फ ऊपर वाले को सेलेक्ट एवरेज ऑर्डर टोटल, तो ऑर्डर टोटल आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, सवाल ये है। आपको कहीं से तो ऑर्डर टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो आप इसको एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आपने पहले यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और फिर उसको यूज़ करके आउटर में आपने एवरेज निकालना है और फिर आपका आंसर हल होगा। तो इसमें आप भी देखिए स्टेप वन में, क्योंकि जो हमारा सवाल था वो आपको पता है कि हमें एवरेज ऑर्डर, एवरेज अमाउंट पर ऑर्डर को कैलकुलेट करना था। तो हम पहले जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस टोटल अमाउंट का हम एवरेज लेंगे। तो इतना तो हमें पता था। तो अब ये दो अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, तो हम एक साथ काउंट भी और एवरेज भी नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को। तो हमें इसी वजह से नेस्टेड क्यूरीज या जो सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें स्टेप वन क्या है, इनर क्यूरी, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑर्डर। ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑर्डर। तो हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, इस टोटल कॉस्ट को, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्डर टोटल। ये तो ये एक टेम्परेरी टेबल बना देता है, जब हम ए एस लगाते हैं ना वो टेम्परेरी टेबल उसका बना देता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर क्यूरी वो क्या करता है, वो एवरेज निकालता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, एवरेज निकालता है टोटल कॉस्ट का। तो फिर हम ये जो ऑर्डर टोटल है इसका एवरेज निकाल लेते हैं, जो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा। उसको जब हम रन करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा ये कुछ और आ गया है। एक मिनट, अच्छा सेल्स ऑर्डर, ये सिंगल लाइन में ऑर्डर आना चाहिए, एज ऑर्डर टोटल्स। अच्छा ये रिज़ल्ट आया है, तो ये ओवरऑल। ठीक है, ये रिज़ल्ट थोड़ा सा दोबारा इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एक मिनट। ये बेस्ट फॉर क्लियरिटी। ठीक है, अभी ये इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, अब इसको रन करेंगे। हाँ ये हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए और ये आ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट था, ये आ गया। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, 70614511। ठीक है, आंसर आ गया, और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया क्योंकि वो मुझे समझ आ गई कि ये नेस्टेड क्यूरीज का कॉन्सेप्ट है। इसमें जब भी हम एक टाइम पे दो डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे अगर हमने काम करना है तो सबसे पहले हमें एक को अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसके रिज़ल्ट से हमें दूसरे को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब इस तरह का कोई सीन आपके पास है तो आपने नेस्टेड क्यूरीज या सब क्यूरीज को इस्तेमाल करना है। तो एक और टिप इसने बताया है कि भाई सीक्वल में जब सब क्यूरी आप लिख रहे हो तो जब सब क्यूरी होती है, सब क्यूरी मतलब इनर क्यूरी, इनर क्यूरी में जो फॉरम क्लास है ना उसको आपने हमेशा एलियस देना है, ताकि फिर उसको रिज़ल्ट, वो जो एलियस देगी आप उसको रिज़ल्ट कंसिडर करते हो। जैसे ऑर्डर टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑर्डर टोटल आप इसको कंसिडर करोगे तो फिर आउटर क्यूरी को पता चलेगा कि भाई मैंने क्या चीज़ बुलानी है, किस चीज़ को बुलाना है। ठीक है, किस चीज़ को बुलाना है।
फ्रॉम फ्रॉम को एज ऑर्डर टोटल्स। देखिए तो ये फ्रॉम को ऑर्डर टोटल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस फ्रॉम को जो इनर क्यूरी के लिए आपने बनाना है ना, ठीक है, या जो सब क्यूरी आपने तैयार करनी तो वो फ्रॉम से आपने करनी है। तो फ्रॉम से तो जब करनी है तो आपने इस पूरे, ये क्या बोलते हैं इसे, इस पूरे सेटअप को आपने एस ऑर्डर टोटल बोल देना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो आउटर क्यूरी है उसको पता चलेगा कि मैंने किस चीज़ को बुलाना है, किस चीज़ को बुलाना है। तो विद दैट एक्सप्लेन हो गया ये। और अब हम मूव करते हैं अपने डे 7 की तरफ ऑफिशियली, और हम डे 7 को स्टार्ट करते हैं। So day 7 is officially on. Now what does day 7 says? Day 7 is on. Let's go. Welcome to analysis plus storytelling day. Okay. From today it is not just numbers, it's insight. Aha. Rules stay the same. Rules of the game are the same. No hints, no column reminders, no training wheels. Pure business decisions. You decide tables, joins, logic. I am in an executive review mode now. Okay. ChatGPT is getting serious now. Day one, question one, trend analysis. Now, what is the business question? How has total sales changed year over year? There is it. No shortcuts. Build it like it's going to a board deck. Write the query when ready. Okay, so the question is, how has the total sales changed over year? How has the total sales changed over a year, over year? Okay, so now let's hit the drawing board here to solve this query. डे 7 ऑफिशियली ऑन हो गया है, ठीक है। और डे 7 भी वो कह रहा है कि वेलकम टू एनालिसिस प्लस स्टोरी, कह रहा है कि वेलकम टू डे 7 सॉरी, कह रहा है कि डे 7 ऑफिशियली ऑन हो गया है। तो आज आप खुश आमदीद कहते हैं, आज हम करेंगे एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और आज से वो कह रहा है कि कोई नंबर्स नहीं, आज से सिर्फ इनसाइट्स, ठीक है। अच्छा, रूल्स स्टे द सेम, कवानीन वही हैं, ठीक है। कोई हिंट नहीं, कोई कॉलम रिमाइंडर नहीं, नो कोई ट्रेनिंग व्हील नहीं, ठीक है। प्योर बिजनेस क्वेश्चन, आपने खुद डिसाइड करना है कौन सा टेबल, कौन सा लॉजिक, ठीक है। मैं एग्जीक्यूटिव रिव्यू मोड में हूँ, ठीक है। ChatGPT सीरियस हो गया है, ठीक है। अब डे 7 है, क्वेश्चन 1 है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस क्वेश्चन, हाउ हैज़ टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स जो है वो चेंज हुआ है ईयर ओवर ईयर, ठीक है। साल साल दर साल जो सेल्स है वो किस तरह चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसका सवाल आपने देना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने इस तरह का जवाब देना है कि ये आगे जाके डैशबोर्ड को हिट करेगा, ठीक है। तो आप क्यूरी लिखें और बताएं। चलें इसकी क्यूरी लिखते हैं। आप सवाल तो समझ आ गई कि टोटल सेल्स ईयर ऑन ईयर चेंज किस तरह हो रही है ईयर ऑन ईयर। चलें आप अब इसकी क्यूरी पे काम करते हैं। अच्छा, तो अभी व्हाट इज़, थोड़ा सा इस पे रिसर्च भी तो करेंगे ना। व्हाट इज़ ईयर ओवर ईयर, ठीक है। व्हाट इज़ ईयर ऑन ईयर चेंज, ठीक है। व्हाट इज़ ईयर ऑन ईयर चेंज? Year on year change is a financial comparison that measures the percentage of 12-month period. It compares a current time period such as a month,
quarter with the exact same period from the previous year, from the previous year. ये mirror क्यों करता है? The primary mirror of IOI is that it removes the influence of seasonality. अच्छा, sales might show massive jump due to holiday shopping. A year on instead looks at this December versus last December, providing much clearer picture of actual growth. ठीक है. To calculate year-on-year change, use one mathematical standards, direct division, then multiply other matrices. This analyst use YOR alongside other data purpose for identifying long-term trends, removing seasonality. ठीक है. LOM best for detecting immediate shifts or the impact of specific campaign. ठीक है. Year to date, YTD measures the cumulative performance from the January 1st to the current date और जब से start हुआ. ठीक है. While a positive YOI usually signals growth, always consider external context or 20% growth great, but if they 40% during the same period, you might be actually losing market share. ठीक है. Would you like to calculate how a year for average order weight you using a SQL query? No, 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 no. Okay. Total sales changed year over year. Total sales changed year over year. तो इसमें हमें जहाँ तक मुझे लगता है कि दो चीज़ें चाहिए होंगी क्वेश्चन 1 के लिए. ठीक है. सबसे पहले तो एक डायमेंशन टेबल. ठीक है. डायमेंशन टेबल तो मुझे चाहिए डेट का, डिम डेट का एक डायमेंशन टेबल चाहिए. और उसके बाद है फैक्ट इंटरनेट सेल्स. उसके बाद हमें चाहिए फैक्ट इंटरनेट सेल्स. ठीक है. और फैक्ट इंटरनेट सेल्स से हमें चाहिए सेल्स अमाउंट. ओके भाई. ओके. तो अभी हम जाते हैं इधर. टेबल्स हम चेक करेंगे. टेबल्स में डिम डेट. ठीक है. कॉलम्स. डेट की प्राइमरी की. ठीक है. कैलेंडर इंग्लिश में कैलेंडर ईयर. हाँ, कैलेंडर ईयर हम यूज़ करना. कैलेंडर ईयर भी है. कैलेंडर ईयर भी है. ठीक है. और फिस्कल सेमेस्टर भी है. एक मिनट गाइस, इस समय मुझे सर्दी लग रही है तो मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ इसका. इंतज़ाम हो गया. आप कैलेंडर ईयर को टारगेट कर सकते हैं. हाँ ना. कैलेंडर ईयर, फिस्कल ईयर नहीं. ईयर ओवर ईयर. तो कैलेंडर ईयर पे हम काम करेंगे. हम कैलेंडर ईयर पे ही काम करेंगे. ठीक है. कैलेंडर ईयर. और इसका जो ये क्या है, डेट जो है वो क्या है. ईयर ओवर ईयर का क्या सीन है यार, मतलब. और अब फैक्ट सेल्स कॉलम पे चलते हैं. प्रोडक्ट की ड्यू डेट, ऑर्डर डेट, सेल्स ऑर्डर नंबर, प्रमोशन की, ऑर्डर डेट की, ऑर्डर डेट की कॉलम में, ऑर्डर डेट की. फैक्ट टेबल के कॉलम में, फैक्ट टेबल के कॉलम में क्या है, ऑर्डर डेट की, ऑर्डर डेट की. ठीक है. ऑर्डर डेट की, ऑर्डर डेट की. और अब ऑर्डर डेट की. ठीक है.
सेल्स, ठीक है। अच्छा, ईयर ऑन ईयर चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हाउ हाउ टू calculate how to calculate y o y, how to calculate y o y year on year, how to calculate y o y, how to calculate y o y change, how to calculate y o y change in, how to calculate y o y in SQL, ठीक है। So the most efficient way to calculate y or y, क्योंकि ये मुझे भी समझ नहीं आ रही y और y, तो इसको थोड़ा सा इस पर रिसर्च ही करते हैं। तो हमारा चैनल का मकसद यही है कि हमने सीखना है। तो y और y is using the leg leg window function. This function always allows you to look back at the previous row value like past years to bring it into the current row for a direct comparison. Using a self join. If you are using not original SQL that does not allow Windows function, ठीक है, you can achieve the same result by you want to integrate IR to the average order value. नहीं यार, how total sales have changed over here. Total sales changed over here. कुछ लिख के इधर दे देते हैं, क्योंकि मैं इधर भी पूछ सकता हूँ लेकिन फिर वो चीटिंग हो जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं है। ये तो पूछ रहा है कि मुझे बताओ, तो मैं पूरा सवाल इसको कॉपी कर सकता हूँ, ये मुझे अच्छा सा वो लॉजिक भी दे सकता है इसका। लेकिन ये है कि क्योंकि चैट जीपीटी के साथ हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया था, तो अब गलती भी करेंगे तो चैट जीपीटी के सामने करेंगे। अच्छा, तो हाउ द टोटल सेल्स चेंज्ड ईयर ओवर ईयर, ठीक है। देयर इज इट नो शॉर्टकट्स। अच्छा, तो ईयर ओवर ईयर, ईयर ओवर ईयर, ईयर ऑन ईयर ओवर ईयर, ईयर ओवर ईयर की ट्रेंड एनालिसिस पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अच्छा, चलो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट क्या करते हैं, डिम डेट, डिम डेट में हम क्या करेंगे, कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर। उसके बाद सम सेल्स amount, some sales amount is total sales from from fact internet sales, ठीक है। आपने सबसे पहले तो कैलेंडर ईयर वाइज इनको सेल्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर, एक मिनट, ग्रुप बाय डिम डेट कैलेंडर ईयर। अब
अच्छा, तो ये इसको सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, मैं तो कहता हूँ हाँ, JOI ज्वाइन dim date on fact internet sales dot order date की is equals to dim, नहीं यार, dim date, dim date का डेट की, ठीक है। अब हाँ, ज्वाइन करने से वो काम हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब भी प्रॉब्लम आ रही है। अब ग्रुप ग्रुप बाय डिम डेट कैलेंडर ईयर। अब ये ठीक है। Get the value from the previous year leg। So to calculate the change year over year for this query, we have written this query initially, just to understand the are you good to start the flow with the question or the query itself. So we have calculated the 2012 20 for 5 years. We calculated the total sales for every year. Now we have to calculate now we have to calculate only we have to calculate the change year over year. Okay, so for that, let's research it from Google or something, so that we could come up with some new solutions. तो अभी तक इस सवाल को हल करने के लिए जो लिखा हुआ है, हाउ हैज़ द टोटल सेल्स चेंज ईयर ओवर ईयर, तो इसको हल करने के लिए हमने ये क्वेरी अभी तक लिखी है, ठीक है। हम आगे भी इसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी हमने बस मैंने ये चेक करना था कि आया थोड़ा सा, मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए ना क्यूरी को, तो हर साल की सेल्स मुझे मिल गई है यहाँ पे। और ये अगर आपको याद हो, शायद 6 में हमने एक दफ़ा इसको किया था, या शायद 5 में इसको एक दफ़ा हमने किया था, सारा कैलकुलेट हमने किया था। तो ये हमारे पास अभी आ गया। तो अब हमने ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करना है। तो अब क्योंकि ईयर ऑन ईयर एकदम से एक नया टॉपिक है मेरे लिए, ठीक है,
तो इसके लिए थोड़ा सा हमें गूगल को रिसर्च करना पड़ेगा, तो अभी हम चलते हैं रिसर्च की तरफ और रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? LAG SUM some sales amount over by year over by अच्छा जी। तो ये चेट गूगल को भी थोड़ा सा टटोला है, तो यहाँ पे कोई लेग शेक की बात हो रही है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, बट यही है कि हम लर्निंग के लिए इधर बैठे हुए हैं। तो ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई ये तो मैंने हल कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको आज से ना 7 डेज़ क्योंकि हो गए हैं, तो इसने बहुत ही बच्चों की तरह मुझे ट्रीट कर लिया। अब मैं इसको बोलूँगा कि मतलब जिस तरह एक सुपरवाइज़र अगर गलती पे गुस्सा करता है, तो फिर आपने इस तरह गुस्सा करना है। मतलब जो नॉर्मल ऑफिस कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में लोग बोलते हैं वो करना है, ठीक है। तो ये मैंने कहा, अब मैं इसको कहता हूँ कि आई आई struggled I struggle to calculate year on year YOY. So guys, we have the problem here is now that I couldn't even figure out the YOY, the year on year change, and I could only calculate the total sales for each year. So let's ask ChatGPT for now, and let's see what ChatGPT comes up with. Okay, so I have written that I struggle to calculate the YOY, and from now on, on no more, no more pampering. Okay, no more pampering. Only strict, only strict corporate attitude, only strict, no more pampering, only strict corporate attitude regarding queries, regarding queries, regarding queries. Okay, so I've asked him that I struggled to calculate the QYOY. From now on, no more pampering and strict corporate attitude. Let's see what ChatGPT gives us. तो दोस्तों ये सीन हुआ कि मैंने कैलकुलेट तो हर साल की सेल्स तो कैलकुलेट मैंने कर दी थी, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर चेंज है वो एक मेरे लिए नया टॉपिक था। क्योंकि मैंने इसको, मुझे याद आ रहा है वो एक होता है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुझे थोड़ा सा लग रहा है मैंने इसको एक दफ़ा किया था, इसकी प्रैक्टिस मैंने की है। और वो जब ड्यूरिंग माई कोर्स डेज मैंने ज़रूर इसको किया होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कभी मतलब ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने कभी मिस नहीं करवाई, तो उन्होंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई थी। तो वो मैथ शायद मेरी अभी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मुझे याद नहीं आ रही। तो आज इस तरह होगा कि आज मैं वो वीडियोज़ देखूँगा दोबारा से, तो होपफुली वो चीज़ें भी क्लियर हो जाए। लेकिन अभी के लिए ये है कि क्योंकि 6 दिन से हम लगातार अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो एक दिन बुरा भी होता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हम दिल बर्दाश्त नहीं होंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं कि ChatGPT ने हमारे लिए क्या रखा है।
So so after pasting my query, it said understood, switching tone now regarding this context. Okay. Now the query review, executive standard. Select, it's my query. It's my query which I have written. And assessment is acceptable but incomplete. Okay, it is acceptable but it is incomplete. This query only shows annual total sales. I know that. It does not show year on year change. I know that. In a corporate setting, this would be returned for revision. Okay, it would be returned for revision. Okay, corporate infrastructure, sorry. You correctly identified the struggle that is expected. Now we fixed it. Okay. Why this is not YOY? Important. YOY requires comparison. Okay, this thing is not YOY because YOY requires comparison. Yeah, I know that. Now the problem is I don't know how to compare them. Okay, so a YOY matrix answer. So what does a YOY matrix answer? How did this year performed compared to last year? Okay, so the YOY matrix says that how this year performed compared to last year. Okay, so this means you need current year sales. All right, current year sales. Then I would be needing previous year sales, obviously, and then I would be and I have to compare them. Okay, and then it is written a simple group by year. Group by year is not analysis, it's aggregation. Okay, it is not analysis, it is not comparison, not analysis. It means that a simple group by, just doing group by year is not an analysis, it is an aggregation. Okay, now executives don't ask for aggregate, they ask for change, growth, decline. Yeah, there's these executives, they never ask for aggregate, they don't need it. They want to always compare so that they can make better future decisions. He is correct at this point. So now what is the correct way to calculate year on year calculation on a SQL server? This is what real analyst submits. Now what real analyst submits with yearly sales as select dim date calendar year as sales year. Okay, deliver as sales year and some sales amount as total sale. Okay, so I will be start correcting my query as well alongside it so that I could understand it better. Sales year now with yearly, and now with yearly, now with yearly, now with yearly sales is okay. Group by calendar year control as dim date as calendar sales year, some sales amount as total sales. Okay, from fact internet sales, join dim date, fact order key, date key, calendar year. With yearly sales is ये जो yearly sale है. अच्छा, so this is the yearly sale. So what he has done is that the query which I have written,
for all the uh, for the previous query which I have written, it has just you know done with you can say without yearly sales with yearly sales is then what I have done that I have to select the sales year total sales, okay, and then total sales minus leg total sales, okay, from order by sale. So what do? We just remove it. Okay, let's write this query. Paste, run. Okay, this is the query. Okay, so I asked ChatGPT to give me the right answer to this question. So ChatGPT just shared this with me. Now, what I had written previously, if you remember, I had written this thing completely. Okay. So what ChatGPT has done, it is just use this function with. Okay. So let's just ask him why we use with with function. Why we use with function. With is used to create a common table expression. Think of it as a way to create a temporary named result set that you can use it. It is currently used to replace nested queries. Hmm, nested queries. So why use with instead of subquery? ठीक है, readability. It breaks down complex, messy queries into logical named step instead of reading them inside out. With subquery reading from top to bottom, you can reference the same CTE multiple times, same query without rewriting the logic. It allows you to build final result layer by layer, and you can increment the CTEs in one by separating them with commas. Recursion, it only performs recursive queries. Iterating with total orders. So explain. Okay, explain this code to me step by step. Again, explain this code to me step by step. Explain this code to me step by step. Okay, explain this code step by step. It is for the question. What is for the question? What is the question? What was the question? How is the
total sales changed year over year. Paste. This query is more advanced version of your first query. Instead of one giant nest, it uses CTE with to organize the logic into two clean, aggregating the data and then calculating the change. Okay. This query is more advanced version of the first query. Instead of one giant nest, it uses CTE, common table expression, to organize the logic into two clean steps. First, it aggregates the data, which I have done initially, and then calculates the change. Here's the step by step and the CTE with yearly sales as. This part creates a temporary summary table in computer's memory. The joins. It connects facts where money is and dim date where year is using quarter date key. The aggregation, it groups everything into calendar year sales amount. The result will show first two columns with the now main wire on year logic. Main select. Okay. Now that we have an yearly total, we use Windows function to compare them. Windows function क्या है? Lag total sales over. This is the time machine. It looks for the row above the current one. Grab the last year. Take it. It subtracts them. Year on year change. The trick is 0.1 indicator visualizing the logic. ठीक है. It will look like this. Now data says lag. Either growth or 20%. You can wrap the growth rate. So we try to combine it with combine. CT common table expressions. Common table expressions. So after some deliberation, after a long tedious deliberation and some brainstorming, I had come up with this query. Okay. Now when I ran this query, it is giving me these total sales. Friends, after a long and deliberate brainstorming and some active research around the web, I had come up with this query to solve question 1, which was how has the total sales changed year over year. Now I have used the typical sentencing which I have used to calculate this calendar year and the total sales for each calendar year. Now after that, I do not understand the year on year change and how to work on it because it's a new term for me.
So I asked ChatGPT about it, okay, and then I said that I struggle to calculate the year-on-year change, and I also told him to be more strict. Okay, do not pamper for everything. Just be strict and give me a corporate environment. So the review, it started reviewing my code, and it gave me the assessment that it was acceptable but incomplete. Okay, this query shows annual total sales. It says that this query shows annual total sales, but it does not show the year-on-year change. Yes, it does not show the year-on-year change. In a corporate setting, this would be returned for revision. In a corporate setting, it says that this would be returned for revision. You correctly identified the struggle that is expected. Now we fix it. Now he's saying that we expected that you won't be able to do it because it is CTE. I think so. We have moved to a more advanced version after joins. It is the common table expression. So I am struggling at this point. So okay. So why this is not year on year? Okay. So whatever I have written here, why is it not year on year? Because it is showing the total sales for each year, but it is not year on year. Why? It is because the a year on year change, a year on year metrics would answer that how did this year perform compared to last year. Okay, so that means that a YOY is not just simply values of each year so that you can see that, oh, we have performed. No, 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 you have to compare these years. You have to compare these years. So this means that you need current year sales, you need previous year sales, and you need to compare them. You need current year sales, previous year sales, and most importantly for a YOY you need to compare them. Okay, so a simple group by year is not an analysis, it's an aggregation. Okay, so this is some daunting expression from ChatGPT. It says that if you group by simply by year, that is not an analysis, that is not an analysis, it is aggregation. Okay, there's a difference between analysis and aggregation. Aggregation is just adding numbers over top of each other. So executives don't ask for aggregates, they ask for change, growth, decline. Okay, executives don't ask for aggregates. So executives don't ask for aggregates, they ask for change, growth, and decline. And this is really the case because executives don't care about the aggregation. They don't want to know these values, they already know. They want to know whether it changed from the previous year, or what type of decisions they took which resulted in that change, so that they can improve their strategic thinking. Okay, so it is fair enough. So now ChatGPT has given me a code, and it has explained this code. Now this whole code, if you read it, is a long code, but it is very simple, it is pretty logical. Okay, now the code starts, if you see why ChatGPT was saying that I was correct somehow, it was because I did the initial step correctly. The initial step was to calculate the total sales for each year. Okay, to calculate the total sales for each year, which I have done perfectly here at this point. Okay, with some changes it would work out, but the main thing was the year on year change, which I couldn't. So this thing, this code is pretty much same whatever I have written here as my query. Okay, and it would be giving me this result, and he wants this result. But the second thing, it is this, the year on year change. This is the year on year change calculation. Okay, so now we would going again from the beginning. Now whenever we use with in SQL, that means it's part of modern SQL, where we use it to use the common table expression, CTEs. Okay, now what are CTEs? They are common table expression. They are used instead of the nested queries or the sub queries, which we have done on the average order value, if you remember. Okay, in this video which we have done. So instead of that, we use the CTEs. Okay, so what are the CTEs? So before explaining this to you, when I got these results, I don't want to ask directly from ChatGPT, so I asked the Google. I have written the whole code here,
I explained him the whole code, and I said that just explain it to me step by step. So Google just said that whatever you have seen here, it is called CTE. Okay, it's a common table expression which is used with function to organize the logic into two clean steps. Okay, aggregating the data and then calculating the change. So whatever I have done here, I aggregated. ChatGPT also told me that I was aggregating, but I was not calculating the change, and I have to calculate the change uh, in the same query. I have to first aggregate the whole data, and then I have to calculate the change in the same query. I have to calculate the same. I have to calculate the year-on-year change in the same queries. That is why it is using the CTE, common table expression. The common table expression. So this was the aggregation which I did. Okay, I aggregated the data perfectly, but when it comes to the year-on-year change, I struggled. So it is saying that the Google is saying that this code is an example, a prime example of CTE, common table expression, where we want to organize two logics into two clean steps according to our needs. First is we want to aggregate the data, and then we are calculating the change. Simple. Okay, so here is the step-by-step breakdown which Google has done for me. The CTE, okay, common table expression with yearly sales as. So with yearly sales as, this part creates temporary summary table. This part creates temporary summary table in computer's memory. Okay, it creates a summary table, and then we are using these joins and everything which is already here. So it is just to create the nested to create the CTE with. Okay, so our whole aggregation was just single giant logic, and it is going to return a single these values, and it's going to create a temporary table up there, and then we would be moving towards the year-on-year comparison. Okay, so the main logic here it is that now that we have yearly totals, we use Windows function to compare them. Okay, now we use the Windows function. So what is the Windows function? Windows function is the leg total sales over order by sales. This is the time machine. It looks at the row above the current one to grab the last year's sales. Okay, so the year on year change, this subtracts last year from this year. Okay, and raw dollar increase or decrease. The trick is this: visualizing CTE. Okay, main select runs photos. It sees total sales $120. You can wrap up the growth rate in this format. Okay, you should try to combine average numbers. Okay, so this is the CTE. We have got a temporary table here to be executed in the next step, because we have first aggregated the whole total sales, and then we have compared the year-on-year comparison. Okay, so then we have used the data from the aggregation part, and we have solved for our year-on-year change. Now if you see in the year, if you see what was a little bit changed about our code, it was the width. Okay, it was with width. So width is sales, and select dim customer calendar year. Okay, so we want to select the calendar year. We want to select the calendar year as sales year. Okay, sales year, fair enough. Some sales amount is total sales, it's fine. Dim date on the joining them, calendar year, it's everything. Rest is fine with only. Okay, the only thing which we want to do here is right now with yearly with yearly sales is calendar year. Okay, is it fine? Let's try to run it. Okay, let's
No, it's not working. Maybe I'm writing it a bit wrong. So what should we do here? We should remove our code from here and we should just copy paste it. Let's just see the code, if the code is working, you know. It was given to us by ChatGPT. It's given to us by ChatGPT. Start. All right. So here is our results. So you see the aggregation part we have done correctly. So it is also mentioned here. Now this is the year-on-year change and it is the year-on-year growth rate. Okay. So these are the results which we have. So I think that the code worked, and we have entered a new territory here. At this point I might announce it. We would be now working with CTEs, Windows functions and all this stuff, because before this we were doing some, whatever we were doing there, those were they were major part of the SQL, but they were the logics, the concepts, they were easier to understand. So now we would be moving towards the more advanced. These are more very advanced functions, because the CTEs, the common table expression, they are advanced level of SQL. And also because in the real life world, these types of questions are expected, where you are not only supposed to solve only one question. One question means that if a question is asking for something, or a question is asked from you, that doesn't mean you only need a specific type of data to solve it. You might be needing one steps or two steps. So that is why we adopt to CTEs. Now the problem here is that as for the CTE is concerned here at this point, I need to be able to revise it, because because it took a lot of time to solve this function, the CTE, because as you have remembered that I have already taken a course in 2025, but because of some problem with my practice, I forgot everything. So I need to revise the CTEs again, so that in the future, because with the day 7 questions, I realized that we will be working now more towards CTEs, because the questions will become more harder for us as we progress through the days. Now as far as day 7 is concerned, it took a lot of time to just solve one question, and more importantly, the queries were very new to me. So to understand the queries better tomorrow, to adapt to the CTEs, I would be needing to understand the CTE to its core, and also the Windows function, so that I could understand these things on and off, and I could be working on it, and I could be performing these actions live in front of you. Now the question is, okay, so how many questions do you want to attempt here today on day 7? So this is only the first question, and I think so we have already utilized a lot of our time just to understand this query. Now the problem here, let me tell you that the problem here was not that I was not aware of these concepts. Okay, this was not a problem. The only problem here was that I didn't revise those concepts. In the CTE, I am familiar with it, but because after such a long time, when you see such a long code, you kind of get overwhelmed by it. Okay, so because of that, it took me a lot of time to comprehend this query, this code, which kind of consumed a lot of our today's session's time. But anyways, we are here in the, as I always say that we are in the business of progress. We are progressing, we are learning day by day, and that is the whole point of this YouTube channel or this whole videos. So I have understood what I have to do, and hopefully from tomorrow, because we will be continuing day 7 tomorrow, I think so. Maybe we would be doing another question here. I would take another question today, and after those 2 questions I'm going to be wrapping up this session, and the next 2 questions I would be doing it in day 8 along with the day 8 questions.
But before that, I would be, today after my session, I would definitely hitting the CTE subjects, CTE concepts, so that I could, I could be easily be able to comprehend these queries tomorrow without wasting a lot of time. So this was the question one for us. Okay, so we understood the Windows function, also this lag concept, over, order by, and these a few, for example, the with, over, order by. So these things would be, would need to be checked out, would need to be worked upon, so that we could, comprehend it much properly tomorrow. So why this meets the corporate standards, uses Windows function? Yeah, this Windows function, this thing, the comparison one, it needs to be checked. Use separate aggregation from analysis. Yes, because of CTEs, it aggregated above, okay, and then it analyzed. It produces absolute YOY change in percentage growth. Okay, it gives percentage growth. It is ready for dashboard, board decks, and forecast discussions. Okay, so this is the question 2. Strict mode, no hints, no forgiveness. This is the performance review question. Take a performance review question. Which product experienced a decline in the total sales compared to the previous year? Okay, now I think this question is again related to the trends, and as far as I see it, hope you don't mind, but I think so I would be much better off attempting this question when I have revised my concepts, or when I have revised my concepts. I would be better off attempting this question, and I would be easily understanding this other. For example, there are a lot of things regarding Windows to be learned, these Windows functions to be learned, and some things, and also regarding the CTEs to be, revised. So with that being said, I would be only attempting question 1 today for day 7, and it is the first time that we stopped at a single question. So anyways, I'm not losing hope, because it was a great learning experience, and because it has become more difficult, because it has become very difficult for me now. So that means that it is a great time to learn, it's a great time to grow, it's a great time to get out of your comfort zone, it's a great time to learn it as we progress through this process, as our progression moves towards the next goal, which is to understand SQL better. So what is this day 7 question 2? I will be performing it tomorrow, and I think so that I will be better off doing it tomorrow, along with day 8 questions, after I have revised these concepts. Okay, so with that being said, let's try to wrap up today's session. This is Mohammed Nisar Khan, and don't forget to like, share, subscribe, and turn on the bell notification on, so you do not miss any updates regarding our day-to-day this progression challenge. And today, it was you cannot say it was a bad day. It was a great day, I believe, because if I have struggled with a question, that means that now it is the time that I get learn because from the last 6 days, you can see I was doing these questions over and over again with single attempts. I was doing them perfectly, I was doing them to the point. There was some learning in it, but not a lot of learning. Now with this question today, when I have it has consumed most of my time just to solve this one question. This means that now I have a lot of time to grow. Now I have a lot of opportunity to grow, and now I have a lot of opportunity to learn it, which makes me happy, first of all. And one thing, let me be assured that there is no way I am just because it is getting more difficult, more challenging, I'm going to leave it. No, I'm doing it, I will continue to do it, and the 21-day challenge is on, and this is discipline. These types of things happen. For 6 days you are hitting all the sixes, but then suddenly on the day 7, just as people expect you to continue with your progress, you suddenly stumble upon the one question and you struggle with it. And that is part of life, that is part of learning. And
This is what progress looks like, the real progress. It looks like this, that you do not, move in a straight line towards your goal. No, you struggle, you sometimes don't understand the concepts, you need time to revise those concepts, and then day by day you improve them. So with that being said, as I already said, don't forget to like, share, subscribe to my channel, and don't forget to press the bell notification on so you do not miss any updates. This is Muhammad Nisar Khan signing off for day 7, and inshallah I will meet you tomorrow at day 8 as I try to hit all the day 7 questions and day 8 questions tomorrow with more with some knowledge and some revision of these concepts. All right, then take care. Allah Hafiz. तो दोस्तों सीन ये था कि हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर दिया था। जो सवाल था वो ये था, आज के सवाल जो डे 7 के हैं उसमें पहला सवाल ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर था, और हमें चैटजीपीटी ने बताया था कि आज के सारे सवाल जो हैं वो ट्रेंड के ऊपर होंगे, कंपेरिजन्स के ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सवाल था वो ये था कि हाउ हैज़ द टोटल सेल चेंज्ड ईयर ओवर ईयर। ईयर ओवर ईयर की आपने कंपेरिजन करनी थी टोटल सेल्स की। ठीक है, और वैसा कि मैंने चैटजीपीटी को प्राइम कर दिया है कि भाई आपने मुझे कोई हिंट नहीं देनी और आपने बस सवाल पूछने हैं और बाकी मैं उसको देखूँगा। ठीक है, तो काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मतलब हर जगह पर रिसर्च करने के बाद आई कम अप विद दिस। ठीक है, ये एक सोल्यूशन था। तो इसमें कैलेंडर ईयर मुझे हर साल का, सारे सालों का जो 5 साल का डेटा हमारे पास है, हर साल का मैंने टोटल कि टोटल सेल हर साल में कितनी हुई है ये सारा मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये वाई और वाई नहीं है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन जो ये मांग रहा है ये वो नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, और उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ मुझे वैल्यूज़ बता रहा है। ठीक है, अब ये सवाल भी अगर मैं किसी से पूछूँ, अगर कोई मुझे ये डेटा रिटर्न कर दे तो मैं भी आई वुड बी नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये जहाँ तक ईयर ऑन ईयर होता है ये आप कंपैरिजन आपसे मांग रहा होता है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन अभी मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब इसमें क्या वजह है आई डोंट नो। तो अभी जब मैंने ये क्यूरी चैटजीपीटी के साथ शेयर की और मैंने उसको कहा कि और स्ट्रिक्ट हो जाओ आप, ठीक है, डे 7 तक आपने बहुत संभाल लिया मुझे, तो उन्होंने कहा कि बस मैं अब स्विचिंग टोन को स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखा, अब मैं थोड़ा सा सख्ती करूँगा। तो अब वो कह रहा है कि यार मैंने क्यूरी को रिव्यू किया। ठीक है, क्यूरी क्या है, एग्जेक्टिव स्टैंडर्ड। ठीक है, एग्जेक्टिव स्टैंडर्ड पर मैं रिव्यू करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारी क्यूरी मैंने रिव्यू कर दी है हमारी, तो ये क्या है। असेसमेंट ये है कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम मानते हैं आपने ठीक लिखा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो वो मैं भी कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वाई और वाई जो है वो कंपैरिजन होता है, इसमें कोई चीज़ भी कंपेयर नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है कि भाई जो ये क्यूरी दिखाती है वो क्या दिखाती है, दिस क्यूरी शोज टोटल, दिस शोज एनुअल टोटल सेल्स। ये क्यूरी क्या दिखाती है, एनुअल टोटल सेल्स। ठीक है, ये क्यों क्या बता रही, एनुअल टोटल सेल्स। ठीक है, वो तो डेटा बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये बाय वाई चेंज नहीं दिखा रहा, ये मैं भी कह रहा हूँ। इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग इसको आपको कहेंगे कि भाई आप रिवाइज करो। ठीक है, जब कॉर्पोरेट सेटिंग में अगर आप ये करके भेजोगे एज अ जूनियर डेटा एनालिस्ट, तो वो कहेंगे कि भाई इसको दोबारा देखो। ठीक है, तो अब क्योंकि वो होता है कि स्ट्रगल होता है लोगों का या जूनियर डेटा एनालिस्ट का, तो फिर वो एक्सपेक्टेड है। तो लेकिन हम उसको फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स करने का तरीका क्या है। ठीक है, फिक्स करने के लिए ये है कि वाई दिस इज़ नॉट वाई ओ वाई। ठीक है, ये जो चीज़ है ये क्यों ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं है, क्योंकि जो ईयर ऑन ईयर है उसमें कंपैरिजन आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के बारे में पहले भी कभी अगर फाइनेंस में मैंने पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि आपने कंपेयर करना होता है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये एग्रीगेशन है, ये एक वैल्यू बता रहा है, ये कंपेयर नहीं कर रहा सालों को। ठीक है,
तो जो वाई वाई का मैट्रिक है वो क्या करता है कि हाउ डिड दिस ईयर परफॉर्म कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि भाई आपको आज इस साल की सेल्स चाहिए, आपको अगले पिछले साल की सेल चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली फॉर अ वाई वाई वो ये है कि आप इनको कंपेयर भी करना है, ठीक है, आपने उनको कंपेयर भी करना है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर एक सिंपल ग्रुप बाय आप ईयर कर दें तो वो कोई एनालिसिस नहीं है, वो सिंपल एग्रीगेशन है, ठीक है, वो मैंने तस्लीम कर लिया। अब ये कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना वो कभी भी एग्रीगेट्स का नहीं पूछते हैं, ठीक है, कि साल का कितना हुआ है। हाँ, वो अगर एक रफ आइडिया के लिए पूछ भी लें, लेकिन मोस्टली नहीं पूछते। वो ये पूछते हैं कि भाई चेंज क्या आया है, ग्रोथ क्या आया है, डिक्लाइन तो नहीं हुआ, ये उनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज़ को ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ग्रोथ हुआ है, कितना हुआ है, चेंज आया है, क्यों आया है, डिक्लाइन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं ये उनकी स्ट्रेटजिक विजनिंग या स्ट्रेटजिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब ये है कि भाई करेक्ट वाई वाई कैलकुलेशन किस तरह होती है, ठीक है। करेक्ट वाई वाई कैलकुलेशन जो कि एक रियल एनालिस्ट सबमिट करता है जब उसको बोले कि रिवीजन का, तो ये तरीक़ेकार है, इससे वो सबमिट होता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये दो तरीक़ों से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्यूरी लिखा है उसने, तो उसमें सबसे पहले अगर आप ये पहली वाली क्यूरी पढ़ें तो ये वही क्यूरी है जो मेरी वाली क्यूरी जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि हम छोटे किस लिहाज से सही भी थे, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें सारा कुछ ठीक है, लेकिन चेंज ये आ रहा है कि विद के साथ इसने कुछ किया है, ठीक है, विद ईयरली सेल्स एज, विद ईयरली सेल्स करके एज लगा के इसने इस सारे को एग्रीगेट करके एक फंक्शन पे लेके आ गया है, और इस विद के साथ इसने इसको एक टेम्पररी मेमोरी पे डाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद उस वहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसको उसने यहाँ पे यूज़ किया है विंडोज़ फंक्शंस के साथ, और ये लेक और ओवर यूज़ करके उसने वाई वाई का जो चेंज है वो कैलकुलेट किया है, ओके। तो ये सारा कुछ किया, तो अब वाई दिस, अब ये सारा क्यूरी है, ठीक है। अब ये कहता है कि यार ये क्यूरी कॉर्पोरेट को क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें विंडोज़ फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। ये जो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ हुए हैं जैसे विथ है, ओवर है, लेग है, ये सारे विंडोज़ फंक्शन है, ठीक है। अब ये है कि ये सेपरेट एग्रीगेशन फ्रॉम एनालिसिस, ये एक बेस्ट पॉइंट है जो कि मुझे समझ आई है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो चीज़ थी एग्रीगेशन तो मैंने भी की थी। तो ये कह रहा है कि यार ये एग्रीगेशन को कंपैरिजन से अलग कर रहा है, एग्रीगेशन को एनालिसिस से, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब एनालिसिस, एग्रीगेशन का मतलब सम करना, टोटल। तो यहाँ पे इसने टोटल किया, और इस वाले पार्ट पे इसने टोटल किया, नीचे वाले पार्ट पे उसने कंपेयर किया, तो उसने एग्रीगेशन को एनालिसिस से सेपरेट किया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सी टी ई, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, सी टी ई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो ये यूज़ ही हमने वो जो, अगर आपने वो एवरेज अभी इस वीडियो में अगर पिछले में आपने देखा होगा, तो जो एवरेज ऑर्डर रेट था जो कि हमने हल किया था वो भी हमारा मिस हुआ था एक दिन छोड़ के, फिर दोबारा जब हमने उसको स्टडी किया तो उसमें भी यही था कि जब भी आपको दो कैलकुलेशंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हों इन अ सिंगल क्यूरी, तब आप नेस्टेड क्यूरीज यूज़ करते हैं। अब क्योंकि नेस्टेड क्यूरीज में एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी, तीसरी क्यूरी, तो जब इस तरह आप, अभी तो हमने दो क्यूरीज किए तो हमें इतनी डिफ़िकल्टी हुई, तो अगर आप देखें कि बड़े इंडस्ट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे, तो उसमें कितनी क्यूरीज होंगी, कितनी नेस्टेड क्यूरीज होंगी, तो उसको पढ़ना भी मुश्किल होता होगा, ठीक है। तो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो काम किया गया है, डेवलपमेंट हुई, तो वो सी के ऊपर काम हुआ, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो उसमें ये होता है कि आपने उन दोनों को एक ही उसमें रखना होता है, एक ही क्यूरी में रखना होता है, लेकिन अब इससे रीडेबिलिटी आसान हो गई है, क्योंकि जब इसने विद का फंक्शन लगाया तो उसका मतलब मुझे पता चला कि भाई अब यहाँ पे जो चीज़ स्टोर होगी, जो भी रिज़ल्ट यहाँ पे स्टोर होंगे, यहाँ पे जो जो भी रिज़ल्ट हमारे स्टोर होंगे, तो वो एक टेम्परेरी टेबल बनाएंगे, ठीक है। और वो फिर वो टेम्परेरी टेबल जो है वो इधर नीचे यूज़ होंगी, और इस तरह करके हम अपना जो रिज़ल्ट है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। हमारे जो दो डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको हम, या मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे एट द सेम टाइम यूजिंग सिंगल क्यूरी, ठीक है। तो अब ये कि अब इससे क्या होता है कि ये हमें क्या दिखा रहा है, ये वाला जो क्यूरी है ये हमें बता रहा है कि वाई वाई चेंज हमें बता रहा है, और उसके बाद परसेंटेज ग्रोथ भी हमें बता रहा है। अब इस तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं ना, ये आप डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो बता रहा है कि ये सारा कुछ फोरकास्ट डिस्कशंस में भी ये यूज़ हो सकते हैं। अब इस तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं ना, ये आप डैशबोर्ड्स पे यूज़ होते हैं, परसेंटेज ईयर ऑन ईयर चेंज। ये जब हम पावर बी आई पढ़ेंगे, पावर बी आई की लर्निंग पे जाएंगे, तो उस टाइम हमको पता चलेगा कि भाई इस पर हम फर्दर क्या चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि डे 7 का क्वेश्चन 2, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन 1 में इतना टाइम मेरा लग गया, मतलब आलमोस्ट सारा सेशन इसने लपेट लिया, ठीक है। और काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च भी की, मैंने इधर भी इसको
इस पूरी क्यूरी को इसको प्लेस किया और मैंने इससे भी पूछा, तो इसने मुझे समझाया कि भाई ये CTE है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, ये वही है एक बड़ा जॉइंट नेस्ट। ठीक है, जो नेस्टेड क्यूरीज आपने ऊपर पढ़ी थी, इनर क्यूरी आउटर क्यूरी, ये भी उसी तरह ही है CTE। ठीक है, इसमें विंडोज़ फंक्शन यूज़ होते हैं और ये वो अपर नेस्टेड क्यूरीज ही हैं और सब क्यूरीज वाला कॉन्सेप्ट ही है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अब हम डे 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में अगर आप देखें तो इसमें भी नो हिंट नो फॉरगिवनेस। अब ये है परफॉर्मेंस रिव्यू क्वेश्चन। अब ये है परफॉर्मेंस रिव्यू, तो वो कहता है कि विच प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन टोटल सेल्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो अब इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, बिजनेस क्रिटिकल आउटपुट, राइट द क्यूरी व्हेन रेडी। तो अब क्योंकि वो क्वेश्चन 1 ही में इतना टाइम लग गया था सिंपल क्वेश्चन में, और उसमें टाइम इस वजह से लगा था कि मैं जो कोड था, ये सारा जो ये कोड है, इसको एक दफ़ा रन भी कर लेता हूँ आपके लिए। इसको मैं कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। कंप्रीहेंड इन अ सेंस कि इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने में, इस क्यूरी को खुद समझने में। इसको मैंने इधर गूगल से भी चेक किया, इसको मैंने कहा कि मुझे समझाओ, मुझे एक्सप्लेन करो, तो इससे मेरा ज़्यादा टाइम इस पे लगा। तो उसकी वजह, अब मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ इतना मेरा टाइम क्यों लगा। वो ये था कि ये एकदम से CTEs जो हैं, ये मैंने अपने जो 2025 के, मैंने आपको बताया होगा कि मैंने SQL की तरफ कोर्स किया था डेटा एनालिसिस का, analytics.pk से। तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने तो सारा पढ़ा दिया था, लेकिन ये था कि उस टाइम तो मुझे सारा आता था। अभी भी मुझे याद है कि CTEs पे कोई ना कोई बात हुई होगी, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर चेंज जो है, ये उन्होंने हर हाल में करवाया होगा, ये चीज़ उन्होंने मिस नहीं करवाई होगी। ठीक है, लेकिन ये था कि मेरे प्रैक्टिस का इशू था। तो अब क्योंकि मुझे वो मेरे उसमें है, मेमोरी में है कि मतलब मैंने मैंने पढ़ा है इसको, तो अब क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ नहीं किए थे, मेरे पास वो रिवीजन नहीं थी, मेरे पास वो आइडियाज़ नहीं थे, तो एकदम से जब ये आया तो मुझे इसको कंप्रहेंड करने में प्रॉब्लम हुई है। तो अब इस तरह होगा कि इस सेशन के बाद मैं बैठूंगा और मैं अपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो पुराने जितने भी नोट्स है सारे निकालूंगा और रिवीजन स्टार्ट करूंगा। जब एक दफ़ा रिवाइज इसको कर दूंगा, तो कल जब मैं इस सवाल को हल कर रहा हूँगा, तो मैं भी इसी स्टाइल में सोच के कर रहा हूँ जिस स्टाइल में ChatGPT ने आज मुझे जवाब दिया है। कि अब मैं मतलब उस एडवांस लेवल पे सोच रहा हूँ, CTE स्टाइल में सोच रहा हूँ कि पहले एग्रीगेट करूँ, फिर मैं उसको कंपेयर करूँ। ठीक है, वो नेस्टेड क्यूरीज वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने अभी अभी तक जो आपने देखा है उसमें देखा है कि मैंने 6 दिन लगातार हर सवाल को मैंने किया है। ठीक है, विद नॉन स्टॉप। कुछ जगहों पे ये भी ChatGPT को कहा कि बड़े आसान सवाल है, तो आप सवालों की ना इंटेंसिटी बढ़ा भी दो। ठीक है, लेकिन अब ये है कि आज के सवाल में थोड़ा सा स्ट्रगल हमने किया। ठीक है, और उसके बारे में फ़र्दर आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो क्यूरी है इसको रन करेंगे, रन करके इसको चेक करते हैं। तो ये परफेक्टली ठीक आया। ठीक है, ये टोटल सेल्स अभी भी इधर शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने शो की थी इधर भी शो हो रही हैं, और इसी से रिज़ल्ट लेके कंपेयर भी किया गया है। ठीक है, ये सारा कुछ रिज़ल्ट आ गया, उसका मतलब क्यूरी परफेक्ट है, क्यूरी काम कर रही है। तो अब क्योंकि मुझे कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगा, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं थे, अभी कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज करूँगा, तो फिर इस तरह होगा कि कल इंशाल्लाह होपफुली ये सवाल भी क्वेश्चन 8 के सवालों के साथ मैं टारगेट में रखूँगा कि वो क्वेश्चन 8 के भी सवालात हों। लेकिन ये है कि डे 8 में फिर हमने डे 7 के सवालात से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 2 से। लेकिन ये है कि ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की बात नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चैलेंज नहीं है। इसको दोबारा एक दफ़ा मैं देखूँगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, मैंने इसको करना है। मैंने ये सवाल समझने, जब तक मैं समझूंगा नहीं तब तक मैंने इसको इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, मैं समझ के जाऊंगा ताकि एक दफ़ा फाउंडेशन बना के जाऊं, तो फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं। ठीक है, और इसको एक दफ़ा रिवाइज जैसा कि मैंने कहा कि कर दिया, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हैं। तो कल इंशाल्लाह इसको हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होपफुली टाइम हुआ तो फिर डे 8 को भी हिट करके जाएंगे। ठीक है, और एक और बात मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी जब ये देखें, अभी तक 6 दिन लगातार मैं आ रहा हूँ, तो उसमें मैंने हर सवाल हल किया है। मतलब डेली के 4 सवाल 5 सवाल जो होते हैं वो मैं डेली के बेस में हल करता आ रहा हूँ। कुछ जगहों पे मैं ChatGPT को ये तक कहा है कि भाई तू मुझे एक्स्ट्रा एडवांस सवाल दो ताकि मैं वो भी करूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं कि यार ये इतना रेगुलर आ रहा है, तो अभी आज डे 7 में आके एक सवाल हुआ, इसमें भी इसकी बस हो गई है, और इससे शायद ये डिसअपॉइंट होगा। मैं कोई डिसअपॉइंटिंग मुझे नहीं हुई, कोई मैं नाराज़ नहीं हुआ, कोई मुझे फेलियर नहीं लगा, मैंने उल्टा इसको इन्जॉय किया। वो क्यों, उसकी वजह है क्योंकि उससे पहले जो सवाल मैं हल कर रहा था उसमें लर्निंग हो रही थी, नो डाउट, लेकिन उसमें क्योंकि वो मेमोरीज में थी,
कहीं ना कहीं शायद मैंने उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, या वो कॉन्सेप्ट दिमाग में ज़्यादा बैठ गया था, तो उस वजह से वो चीज़ें जल्दी जल्दी पिक हो रही थी। तो उसमें मैं सिर्फ लर्निंग मेरी इतनी ख़ास नहीं हो रही थी, मैं बस मेरी रिवीजन हो रही थी। मैं थोड़ा सा उसको रिसर्च करता था तो चीज़ें क्लिक कर जाती थी। इसमें ये है कि मैंने स्ट्रगल की है, ठीक है, कि पहली दफ़ा 7 दिनों में पहली दफ़ा मैंने स्ट्रगल किया है इसके साथ। तो इसकी स्ट्रगल करने का मतलब ये है कि अब मेरे पास जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि अब जब मैंने स्ट्रगल किया, अब मैं जब इसको सीखूँगा तो होपफुली मैं आइंदा इसको कभी नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह, और ये चीज़ मेरे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी एक दफ़ा, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को नहीं भूलना। तो एनीवेज, ये था डे 7 का आज का पूरा सेशन। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, और क्योंकि ये प्रोसेस है और इसमें हम लर्निंग कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन का जो घंटा है उसको बजा दें, ताकि जो भी अपडेट्स हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहें, और आप भी हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल विद मोर एडवांस्ड अप्रोच, विद मोर एडवांस लर्निंग अप्रोच। और अनटिल देन आप अपना सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद निसार खान।